अच्छा, सो आई शेयर्ड माय स्क्रीन। कल मैंने होमवर्क के लिए यहाँ से। ओके, ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऊपर वाले क्वेश्चंस दे वर नॉट दैट डिफिकल्ट, ये अभी आगे हमने वैसे भी करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम द 12th क्वेश्चन एंड ऑटोमेटिकली पिछले क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ओके, one second. Okay, it says the sixth term from the end in the expansion of this is what, ठीक है। उन्होंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दी है कि कौन सी टर्म एग्जैक्टली वो मांग रहे हैं, तो वी नीड टू फाइंड आउट दिस टर्म, ठीक है। अच्छा, सो द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इन टोटल हमारे पास n is 11. When n is 11, तो I know कि number of terms would be 11 plus 1, that is 12. तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 terms होंगे, ठीक है। The sixth term from the end means कि sixth last term, last, second last, third last, fourth last, fifth last and sixth last. This is the term जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपके पास टेक्निकली सेवेंथ टर्म है। अच्छा, अब मुझे पता है मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मुझे एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी है तो मैं स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करूंगी, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, ठीक है। एन इज 11, व्हाट इज आर, कैन एनीवन टेल मी आर की वैल्यू क्या है इधर? 6। एक्सीलेंट, वेरी वेल डन, वेरी वेरी गुड। R is 6, very good। हमें पता है कि it is the seventh term, तो R is 1 less than the term, ठीक है, तो R is equal to 6, very good। तो 11 C 6, A is the first one, it is 3 by 2 power a 3 by 2x power 11 minus 6, then b is minus 1 by 3, ठीक है, minus 1 by 3x की पावर में सिर्फ r, that is 6, and I am going to simplify this। अब एक चीज है, if I start wasting my time in finding out the value of coefficient तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। पहले मैं ये देख लेती हूँ कि क्या मेरे पास x आ रहा है या मेरे पास 1 बाय एक्स आ रहा है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ x एक्सट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। x पावर वुड बी 11 माइनस 6, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x पावर 6 एंड इट वुड गिव मी 1 बाय x। सिंस आई नो कि जो सेवेंथ टर्म होगी उसमें मेरे पास 1 बाय x होगा, तो मैं ऑटोमेटिकली a b और c कैंसिल कर सकती हूँ। इट मीन्स कि d आंसर होगा, ठीक है। एनईटी में आपके पास एमसीक्यूज होंगे, आप बहुत सारे जीआईके का फास्ट के आप जब पास पेपर्स अगर देखोगे आपकी बुक में, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ लॉजिक चाहिए, ठीक है, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपने सबसे पहले देखा कि सेवेंथ टर्म में x होगा, x स्क्वायर्ड होगा, x क्यूब्ड होगा, 1 बाय x होगा, 1 बाय x स्क्वायर्ड होगा। आपको समझ में आ गई 1 बाय x है। अब 1 बाय x वाली सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन डी है। ए बी सी में तो आपके पास सिंपल एक्स आ रहा है, सिर्फ डी में आपके पास 1 बाय एक्स आ रहा है, दैट इज व्हाई आई नो द आंसर इज डी। मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया 11 सी 6 करने में, 3 बाय 2 पावर 5 करने में, माइनस 1 बाय 3 पावर 6 करने में, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब मेरे पास 1 बाय एक्स एक बार आ गया, मैं ऑटोमेटिकली आंखें बंद करके आई कैन जस्ट गो एंड चूज डी एंड डी इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। So I'm going to wait for a few seconds here. Please try understanding this. And if you have any questions, just ask me directly. But these logics are important in order to save time. All right. Okay. So very good. Okay. All right. So it is good. Then let's talk about the
नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, the number of terms in the expansion of a plus b power n. It's very easy. When power is n, what would be the number of terms? Very good, Marine. It would be one more than the power, that is n plus 1. So the answer would be C in this case. ठीक है, ये चीजें आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि जो भी पावर है उसे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती है. अच्छा, the general term in the expansion of a plus b power n is denoted by tr plus 1. ठीक है, so you need to find के general term कौन सी है. ठीक है, अच्छा, अब some students were confused between a and d कि क्या होगा, because यहाँ पे r plus 1 लिखा हुआ है, तो it makes sense. For example, अगर मेरे पास 6 term है, t 6 है, तो r is going to be 5. उन्होंने इसीलिए यहाँ पे r plus 1 लिखा हुआ है क्योंकि आपके पास जो भी r होगा, नंबर ऑफ टर्म उसे एक ज्यादा होगा, तो दैट इज वाई r plus 1th term would have r in it. ठीक है, हमें पता है कि in general it is ncr a power n minus r b power r, जो भी हमने यहाँ पे यूज भी किया था. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ, दिस फॉर्मूला. तो इट इज ऑलवेज एनसीआर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को. सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए इन दिस केस. ठीक है, अच्छा, आई होप दिस इज गुड. इफ नॉट यू कैन आस्क मी. ओके, 15th question is also very easy. The index in a minus b power 17 is what? Yes, what is the index? Very good. Okay, so 17, 17b. Yes, very good. The index is 17, index is not 18. ठीक है, 18 would be the number of terms, index is the power basically. इसको आप exponent भी कहते हैं, इसको आप power भी कह सकते हैं, इसको आप index भी कह सकते हैं. It is b, that is 17. ठीक है, अच्छा, now important question है, sum of the odd coefficients in the binomial expansion is equal to what? अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया है कि the sum of both odd and even is 2 power n, and the sum of odd coefficients is equal to the sum of even coefficients. When I say they are equal, it means कि if the sum of odd plus even is 2 power n, and if the sum of odd is equal to the sum of even, so I can say that the sum of even is going to be 2 power n divided by 2. I can divide this number by 2 when I know it is equally distributed for odd and even terms, right? तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 power n minus 1. So the answer is going to be C here. Very good. Very good, it is C. ठीक है, ऊपर भी जो 11th क्वेश्चन था, दैट वाज अबाउट द सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो सेम इवन कोफिशिएंट्स के लिए भी होगा. इन टोटल द सम इज 2 पावर n, ऑर्डर इवन में चीज डिवाइड हो रही है, मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा, इट वुड गिव मी 2 पावर n minus 1. ठीक है, C is going to be the answer. अच्छा, okay, very good. अच्छा, let's talk about one last question and then we'll talk about the next chapter. Okay, it says the third term in the expansion of 1 plus 6 by x power 1 by 3. अच्छा, थर्ड टर्म लिख दिया क्लियरली. ठीक है, थर्ड टर्म क्लियरली मेंशन्ड है. r की वैल्यू क्या होगी? r वुड बी 2. ठीक है, आपको पता है कि when it is the third term तो r is going to be 2. ओके, तो मैं जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ. NCR a पावर n माइनस r b पावर r. ठीक है, मेरा a 1 है और मेरा b 6 बाय x है. 1 by 3 c पावर 1 by 3 c2 because r is 2. ठीक है, a क्या है? a is 1,
और 1 की पावर में कुछ भी लिखे दैट वुड नॉट मैटर. व्हाट इज b? b is going to be 6 by x power 2. Now this would not make any sense. ठीक है, this does not make any sense. तो आप चाह कर भी इस चीज की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते. अगेन फॉर दिस क्वेश्चन वी नीड टू थिंक अबाउट इट लॉजिकली. ठीक है, इसको हमने लॉजिकली देखना है कि अगर आपके पास ये चीज बन रही है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं सिर्फ इसमें से x एक्सट्रैक्ट करूं तो इट वुड गिव मी 1 by x squared. ठीक है, एंड द ओनली टर्म विद 1 by x squared इज a. दैट इज व्हाई a is the answer. I'll explain this again. Usually हमारे पास जो n होता है दैट इज एन इंटीजर. ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग n जब फ्रैक्शन होता है तो वो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. एंड आप उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म्स निकाल सकते हैं बट वो बहुत लॉन्ग मेथड होता है. दिस मच इज नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल. ठीक है, इसको हमने लॉजिकली सॉल्व करना है. आपको पता है कि r2 होगा, b पावर r होता है, b इज 6 by x. आप जब 6 by x के ऊपर 2 की पावर हम यूज करेंगे तो इट वुड गिव मी 6 by x squared. तो we are interested in the term that would have 1 by x squared in it, and that is a. So a is going to be the answer for this question. Yes, in the answer we have 1 by x squared. ठीक है, very good. So are we good with this one? Please tell me if this is fine with you guys. Okay. Yes, Maham, Mehreen, sorry, Saad and Safyan. Okay. Mehreen is saying yes. Yes, Saad, what about you? You can ask me if you have any query, okay? All right, okay. So all of you are good with it, then that is great. So this was basically the chapter of binomial expansion. Okay, let's talk about the next chapter then. Here it is. Okay. I'll scroll up. All right. Now, students, it is the 7th chapter of your book, that is Permutations and Combinations. Okay. This is the 7th chapter. Let's have a quick overview about the contents and then we'll talk about the question. Okay. अब permutations and combinations में सबसे पहले एक बात ये आती है कि what is the difference in both of them. ठीक है, मतलब कभी कभी ना समझ में नहीं आता कि NPR यूज करना है या NCR यूज करना है, कब क्या यूज करना है. तो let's read this. Differences between permutations and combinations. Permutations में क्या है? Arranging people, digits, numbers, alphabets, letters, colors. ठीक है, permutations आपने तब यूज करनी है जब arrangement would matter. फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट्स को खड़ा करना है अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशंस. ठीक है, उस वक्त ऑब्वियसली अरेंजमेंट वुड मैटर. बट अगर मैंने फुटबॉल टीम बनानी है उसमें, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो कैप्टन है उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, अगर मैंने उनको खड़ा करना है तो उनको तो मैं किसी भी तरीके से खड़ा कर सकती हूँ. उस केस में तो अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, तो वो कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, बट फॉर नाउ वी टॉकिंग अबाउट परमुटेशंस. परमुटेशंस में अरेंजमेंट वुड मैटर. ठीक है, जिस तरह मेरे पास एक नंबर है मैथ्स का 851, मैंने 851 लिखना है तो आई नीड 8 देन 5 देन 1. मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं 158 लिख दूं, वो नंबर ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो जहां जहां पे ऑर्डर अरेंजमेंट मैटर करेगी वहां वहां पर हम परमुटेशंस यूज करेंगे. ओके, तो द कीवर्ड्स आर अरेंज, अरेंजमेंट, सब इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो देन यू वुड नो कि आपने परमुटेशंस यूज करनी. ठीक है, कॉम्बिनेशंस में क्या है? सिलेक्शन ऑफ मेन्यू. फॉर एग्जाम्पल, अब आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में,
एपेटाइजर के लिए अलग ऑप्शन है, बेवरेजेस के लिए एक अलग ऑप्शन होती है, मेन कोर्स के लिए अलग होती है, डिजर्ट के लिए अलग होती है, उसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली आपके खाने का एक ऑर्डर होता है, लेकिन मतलब आप एपेटाइजर में ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, उसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन होता है कि आप गार्लिक ब्रेड ले सकते हो, पिज्जा ले सकते हो, पेप्सी ले सकते हो, ब्राउनीज ले सकते हो, या आप सूप एंड क्रैकर्स ले सकते हो, फिर आपको चाइनीज ले सकते हो, और उसके बाद आप मिंट मार्गरीटा ले सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है परमुटेशंस में और कॉम्बिनेशंस में। जहां पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, वहां पे आप कॉम्बिनेशंस यूज करते हो, और जहां पे अरेंजमेंट मैटर करता है वहां पे हम परमुटेशंस यूज करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस की एक बेस्ट एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टीम बनानी है, उस टीम के लिए बेसिकली मुझे पता है कि उसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगी, मैंने सिर्फ ये देखना है कि अगर मेरे पास 30 स्टूडेंट्स की क्लास है तो उसमें से कितने 10 के ग्रुप्स बन सकते हैं। ठीक है, उस वहां पे हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और यहाँ पे आपके पास कीवर्ड्स क्या होगा, सिलेक्ट, चॉइस, चूज, इस तरह के आपके पास कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, खैर इट वुड बी क्लियर वंस वी टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बाद परमुटेशंस में ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट, ऑर्डर मैटर करता है, सीक्वेंस डज मैटर, 1 2 3 इज नॉट द सेम एज 3 2 1। ठीक है, जब आप परमुटेशंस की बात करोगे उधर 1 2 3 और 3 2 1 दो अलग काउंट होंगे, ये सेम नहीं होते। ठीक है, कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट। ठीक है, मतलब आपके पास एक क्लास है 30 स्टूडेंट्स की, आपने उसमें से कोई टीम बनानी है किसी उसकी, आपको 10 प्लेयर्स चाहिए, आपको 10 प्लेयर्स चाहिए, उसमें से आप कितने 10 के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हो। ठीक है, वो होता है कॉम्बिनेशन। ऑर्डर डज नॉट मैटर, 1 2 3 is the same as 3 2 1. Mathematically 1 2 3 is not same as 3 2 1, but combinations में since order does not matter, तो 1 2 3 हो, 2 3 1 हो, या 3 2 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम सेम ही काउंट करते हैं। ठीक है, ओके, सो ये अच्छा, ठीक है, अच्छा, दिस वाज सम आइडिया। अब हम थोड़े से फॉर्मूलाज की बात करते हैं। अगर आपको समझ में आ गई है कि परमुटेशंस यूज होगा तो आप एनपीआर करते हो। ठीक है, एनपीआर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो हमें एनपीआर समझना है कि एनपीआर होता क्या है। इट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, एनसीआर, और एनसीआर को आप कैसे लिखते हो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशंस में आपके पास एनसीआर होता है, और एनसीआर की जो एक्सपेंशन है वो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर। ये आपने याद करने दोनों फॉर्मूलाज। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो ये हमने खुद ही उस वक्त करने होंगे। अच्छा, ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग्स ओवर देयर। ठीक है, ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीरो फैक्टोरियल। अब बेसिकली अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं, ठीक है, ओके, वेरी गुड साद। अच्छा, अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं, फॉर एग्जांपल 2 फैक्टोरियल, तो मैंने करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन फैक्टोरियल्स। अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं, दैट इज ओनली 1। तो क्या जीरो फैक्टोरियल जीरो होता है? नो। Always remember, mathematicians have defined zero factorial as 1 because otherwise बहुत basic मैथ्स की जो आई वुड से रूट्स हैं वो सब खराब हो जाएंगी अगर हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम कुछ कॉन्स्टेंट्स को याद करते हैं, उस तरह आपको पता होना चाहिए जीरो फैक्टोरियल इज 1। Zero factorial is 1. Zero factorial is not 0. Zero factorial is 1. Please remember this. It is important. और ये बस एक आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप इजीली सॉल्व करके यू कैन जस्ट गेन 1 मार्क। ठीक है, सो जीरो फैक्टोरियल इज 1। वेरी गुड, अच्छा, ओके सुफियान, ये अब याद रखना है कि जीरो फैक्टोरियल इज 1। ठीक है, ओके, ग्रेट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, इट्स इजी। 4 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल, इट्स इजी, बट ये कैलकुलेटर के बगैर करना है आपको। हाउ डू वी डू इट? सो फॉर दिस
4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1 plus 0 factorial, that is 1. 4 into 3 is 12, 2 is 24 plus 1, it's 25. So C is going to be the answer. Very good. Okay. All right. Yes, please try solving this one. All of you, then I'll solve this. I'll solve this one. Very good. Well done, all of you. Okay. Now I know that n plus 3 factorial can be written as n plus 1 factorial into n plus 2 into n plus 3. And this is divided by n plus 1 factorial. So these two would be cancelled and I would be left with n plus 2 into n plus 3. Very good. Acha. And another easy question. What is NPR? हमने डिस्कस किया था इधर. NPR is n factorial divided by n minus r factorial. ठीक है? D. Well done. Excellent. ठीक है? शुरू वाले questions are easy. That is why we are going fast. Very good. अच्छा. Try doing this one. 7p7. अब यहाँ पे आपने वो यूज करना है फॉर्मूला. ठीक है? मैं ऊपर चली जाती हूँ. 7p7 है. Try doing it quickly. Please do not use your calculators for solving this. ये बहुत गलत बात होगी आप लोगों के अपने साथ. Okay. Let's scroll down and see के क्या हो रहा है. ठीक है? The question is 7p7. I know that NPR is basically n factorial divided by n minus r factorial. It is 7 factorial divided by 7 minus 7 factorial. So it would give you 7 factorial. That is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 and into 1. ठीक है? अच्छा, हम कर लेते हैं ये वाला और ये वाला. ठीक है? अच्छा, 4 into 3 is 12 and 12 into 2 is 24. 7 multiplied by 6 would give you 42. ठीक है? अब it's your choice. You can do 24 into 5. It's easy. 24 into 5 would give you 120. ठीक है? This is what we have, and then we can do 42 multiplied by 120. अब यहाँ पे जब आप आ गए हो ना, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आंसर ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना सी हो सकता है. ठीक है? जब आप 42 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज सी. ठीक है? नन वाले क्वेश्चंस में बहुत सोचना पड़ता है, बट अदरवाइज थिंग्स आर वेरी लॉजिकल. ट्रस्ट में थोड़ा लॉजिकली देखना है कि बाकी तो हो ही नहीं सकते, सी हो सकता है. दैट इज व्हाई सी इज द आंसर. ठीक है? Yes, Sufyan, are you good with this? And Saad and Maham, please tell me. Maham, is it okay? All right. And Saad, okay, very good. ठीक है? So we know that हमने logically and cleverly चीजों को देखना है. Okay, great. अच्छा, please do this one. Again, थोड़ा logically करने की कोशिश करिए. यहाँ पे चलती logic ना काम करे, but still try doing it. I'll write down the formula. NPR
is basically n factorial divided by n minus r factorial. ठीक है, so it would be 15 factorial divided by 10 factorial, and now try doing it. All right, so I have one answer. Very good, Sufyan. Please all try doing it without your calculators, okay? Very good, Maham. All right, okay, so I know it would be 15 factorial divided by 10 factorial. Very good, Saad, okay? So I can write it as 10 factorial into 11 into 12 into 13 into 14 into 15. This entire thing is divided by 10 factorial. These two would be cancelled, and now you need to multiply this. ठीक है, तो what you can do is 11 into 12. ठीक है, हम ये कर सकते हैं. अब I know that 11 into 11 is 121. ठीक है, तो 11 into 12 क्या होगा? थोड़ा बहुत चीजों को लॉजिकली लेके चलना है. This would be 132. ठीक है, फिर I can multiply 14 into 15 उसी तरीके से वो जो आप लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करते हैं without your calculators please, and it should give you 210. Yes, 210. ठीक है, and उसके बाद आपने जब तीनों को when you will multiply, तो this is going to give you this as the answer. इस तरह के जो क्वेश्चंस है ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा नहीं आते. ठीक है, क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम लेगी मल्टीप्लिकेशन. आई वुड से एक या दो इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को आप लॉजिकली कर पाओगे, कुछ में आपको सोचना पड़ेगा. इस तरह इधर सारी आंसर्स इतनी कंफ्यूजिंग है कि इतने आराम से ये समझ में नहीं आ रहा कुछ कुछ. ठीक है, तो फिर आप देन यू कैन डिसाइड. अच्छा, प्लीज टेल मी इफ इट इज ओके और नॉट. वेरी गुड. अच्छा, एक मैं आपको हिंट बता देती हूँ, ठीक है, क्या जिसके थ्रू आप ए और डी कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इन मैथ्स व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स, अगर किसी भी एक नंबर के एंड पे जीरो आ रहा है तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसके एंड पे भी जीरो आएगा. ठीक है, दिस इज समथिंग विच वी नो सर्टनली. ठीक है, इसके थ्रू मैं ए और डी कैंसिल कर सकती हूँ. ठीक है, अगर अभी आपके पास कैलकुलेटर्स है सामने, just try multiplying some random number 78 into 9 into 8 into 5 into let's say 60. एंड पे आपको जीरो मिलेगा. तो जब भी किसी नंबर, जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें से किसी एक नंबर के पे एंड पे जीरो होगा, आपको भी जीरो मिलेगा. ठीक है, तो इसके थ्रू मुझे पता था कि या तो आंसर सी या तो आंसर है, ये दोनों बहुत क्लोज थे. तो जब मैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करूंगी और जब मैं सेकंड वाले पे आऊंगी, मतलब ये जीरो आ गया, जब ये वाला आएगा तो उसके थ्रू मुझे समझ में आ जाएगा सी आंसर है. पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसका मतलब है कि जो शुरू में हम स्टेप्स कर रहे हैं हमने वो बहुत केयरफुली करने हैं. ओके, वेरी गुड. ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई सबको. अच्छा, चलो ये आगे हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, how many signals can be given with three different flags when any number of them may be used. ठीक है, okay,
First of all, you guys think about it for a minute, then I will solve this. ताकि आप लोग क्वेश्चन समझ जाओ, then I'll tell you कि कैसे होगा. Very good, Sufyan. Acha, okay. Let's try doing it together now. How many signals can be given with 3 different flags when any number of them may be used? So, अब हमारे पास 3 different flags हैं. आपने सिग्नल देना है. आप कितने टाइप के सिग्नल्स दे सकते हैं यूजिंग 3 different flags? तो इट कुड बी कि हम 3 flags यूज करें, इट कुड बी कि हम सिर्फ 2 flags यूज करें, एंड इट कुड बी कि हम सिर्फ एक फ्लैग यूज करें. ठीक है, हम इन तीनों का आंसर ऐड करेंगे. वी कैन यूज 3 flags, वी कैन यूज 2 flags, वी कैन यूज 1 flag. अगर हम 3 flags यूज करेंगे तो कितने टाइप के सिग्नल आ सकते हैं? 3 फैक्टोरियल. अगर मैं 2 flags यूज करूंगी तो कितने टाइप के सिग्नल आ सकते हैं? 2 फैक्टोरियल. और अगर मैं सिर्फ एक फ्लैग यूज करूंगी, सॉरी नॉट 2 फैक्टोरियल, अगर मैं 2 फ्लैग्स यूज करूंगी, मेरे पास 2 पोजीशंस होंगी. तो मेरे पास पहले के लिए 3 चॉइसेस हैं और दूसरे के लिए 2 चॉइसेस है. ठीक है, इधर क्यों 3 फैक्टोरियल था? इधर 3 फैक्टोरियल इसलिए था बिकॉज मेरे पास 3 चॉइसेस हैं. पहले के लिए 3 है, दूसरे के लिए 2 है और तीसरे के लिए 1 है. ठीक है, और जब मेरे पास सिर्फ एक ही है तो उस पर मेरे पास 3 चॉइसेस हैं. तो आई नीड टू find it out this way. 6 plus 6 plus 3 and this would give me 15. B is the answer. मैं फिर से बताती हूँ आपको. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ समझ नहीं पाते कि यार ये परमुटेशंस है या ये कॉम्बिनेशंस है. ठीक है, हालांकि यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर कर रहा है. ठीक है, मैं रेड पहले रखूं, ग्रीन बाद में रखूं, येलो उस पे रखूं, या मैं ग्रीन रेड येलो करूं, उससे फर्क पड़ रहा है. ठीक है, तो उस हिसाब से सोच के हम लोग कभी कभी थोड़ा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि या तो मेरे पास तीनों फ्लैग्स यूज होंगे, या मेरे पास 2 फ्लैग्स यूज होंगे, या मेरे पास सिर्फ एक फ्लैग यूज होगा. अगर तीनों फ्लैग्स यूज होंगे तो मेरे पास 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 3 स्लॉट्स होंगे और पहले स्लॉट पे 3 ऑप्शंस है, फिर 2 हैं और फिर एक है. अगर सिर्फ एक सेकेंड, अगर सिर्फ मैंने 2 फ्लैग्स यूज करने, तो पहले फ्लैग की मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं और दूसरे फ्लैग की मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. और अगर मैंने सिर्फ एक फ्लैग यूज करना है तो मैं तीनों में से कोई भी एक फ्लैग यूज कर सकती. तो मेरे पास 3 चॉइसेस हैं. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक मिक्सचर है. अब आप यहाँ पे नहीं कह सकते कि यहाँ तो हमने अरेंजमेंट भी की है और यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन भी यूज किए हैं. बेसिकली ये दोनों चीजें आ रही हैं यहाँ पे. सो दी सम वुड बी 15. Are we good with this one? All right, okay, great. Let's talk about the 8th question then.
In how many ways can 4 books of Urdu and 3 books of Islamiyat be placed on a shelf so that the books on the same subject are always together? ठीक है, अच्छा. क्या कह रहे हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लें आप लोग, then I'll explain it again. अच्छा, now we saying 4 Urdu books and 3 Islamiyat books. In total मेरे पास 7 books हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अच्छा. उसने कहा उर्दू और इस्लामियात की बुक साथ होनी चाहिए, तो एक ऑप्शन ये है, ये मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं उर्दू की बुक्स रख दूं और यहाँ पे मैं इस्लामियात की बुक्स रख दूं. ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट चॉइस है. इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि उर्दू की सारी बुक्स एक साथ हैं और इस्लामियात की सारी बुक्स एक साथ है. ठीक है, इसके अलावा भी मेरे पास एक ऑप्शन हो सकती है, और उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली मेरे पास अगेन 7 स्लॉट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7. पहले मैं इस्लामियात की रख देती हूँ, फिर मैं उर्दू की रख देती हूँ. ठीक है, इसमें भी क्या हुआ है, उर्दू की और इस्लामियात की साथ पड़ी हुई है बुक्स. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इस्लामियात की आ गई है, यहाँ पे मेरे पास उर्दू की आ गई, और ये सेकंड चॉइस है. ठीक है, ये इसके कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, 4 बुक्स हैं तो 4 फैक्टोरियल. इसके कितने हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल. इसके कितने हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल. इसके कितने हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल. ठीक है, बीच पे हमने प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना इसको, क्योंकि या तो ये है या तो ये, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही दुनिया का बड़ा नंबर आएगा, इसको आपने ऐड करना है. अच्छा, अब 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 24 प्लस 6. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ये आपके पास 144 है, ये भी आपके पास 144 आएगा, और अब आप इसको ऐड करोगे इट वुड गिव यू 288. तो A इज गोइंग टू बी द आंसर. वेरी गुड सुफियान. एंड व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी. तो अगर नहीं समझ में आ रहा, फील फ्री टू आस्क मी. ठीक है, अभी बहुत कम टाइम रह गया एग्जाम्स में, हल्का सा भी कोई डाउट है तो यू नीड टू आस्क मी. Okay. All right. Great. 24 and 6 multiply होगा. Yes, 24 and 6 multiply होगा. Yes, yes, yes. Thank you. Yes, ये multiply होंगे. Very good. ये multiply होंगे. ठीक है, और आपको फिर 144 मिलेगा, और फिर 144 मिलेगा, फिर आप उसको ऐड करके 288 कर दोगे. अच्छा, एनसीआर क्या होता है, हमने देख लिया था शुरू में. क्या होता है एनसीआर, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, d होता है. ये बहुत बेसिक चीज है, ये वाली आनी चाहिए. वेरी गुड. अच्छा, प्लीज सॉल्व दिस वन, 4C4. n factorial divide by r factorial into n minus r factorial. Try solving this one. Yes, I got 2 answers. I want 2 more. Please answer this. Very good, Saad. Acha. Now I know when I will plug in the values, 4 factorial divided by 4 factorial into 0 factorial, this would be cancelled. It would give you 1. So the answer is going to be C here. Okay? Okay. Very good. Acha. Let's try solving this one. I'll read it. I'll wait. You guys will try doing it and then I'll tell you how to do it. How many even numbers of 4-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 if repetition is permitted? Yes. Please try doing this one. I'll give you 2 to 3 minutes and then we will try solving it together.
Well done, Maham. Very good. And what about the other students? Okay. All right. Let's try solving this question. अच्छा, अब I could see कि थोड़ा सा difficult है. इसलिए I wanted all of you to think about it. It says how many even numbers of 4-digit number can be made from the digits 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now you have 5 digits. Using these 5 digits, how many even numbers can you make? ठीक है, 4-digit number का है 1, 2, 3, 4. If repetition is permitted, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 आ सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है. ठीक है, ये मेरे पास 4 ब्लैंक्स है. अच्छा, नंबर शुड बी इवन. तो लास्ट ब्लैंक के लिए मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस है, कौन कौन से नंबर्स है जो मैं यहाँ से उठा सकती हूँ और मैं एंड पे रख सकती हूँ तो वो नंबर इवन हो जाएगा. एक 2 है और एक 4 है. ठीक है, यहाँ पे अगर 2 होगा या यहाँ पे अगर 4 होगा तो दिस एंटायर 4-digit नंबर वुड बी एन इवन नंबर. ठीक है, तो लास्ट वाली सीट के लिए, लास्ट वाली ब्लैंक के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं. ठीक है, एक 2 है और एक 4 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ. इसके लिए कितनी है मेरे पास, इसके लिए मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, बिकॉज दे सेड रेपिटेशन इज परमिटेड. अगर ये 4-digit नंबर मेरे पास 2 2 2 2 भी होगा दैट इज फाइन. ठीक है, रेपिटेशन इज परमिटेड. तो 5 चॉइसेस है पहले के लिए, फिर 5 चॉइसेस है दूसरे के लिए भी, और फिर 5 ही चॉइसेस है तीसरे के लिए भी. सिर्फ लास्ट वाले के लिए 2 चॉइसेस है बिकॉज इट मस्ट बी इवन, and this is going to give you 250. So the answer would be C. ठीक है, since it is supposed to be an even number, तो लास्ट ब्लैंक के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस हैं. अब उन्होंने, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम 1 लेस करते जाते हैं नेक्स्ट ब्लैंक में, बट व्हेन द एग्जामिनर इज टेलिंग यू कि रेपिटेशन इज परमिटेड, आप सब ब्लैंक्स पे सेव नंबर्स रख सकते हैं. इसका मतलब है कि सेकेंड ब्लैंक पे भी उतनी ही पॉसिबिलिटीज है जितनी फर्स्ट में, थर्ड पे भी उतनी ही जितनी फर्स्ट में. ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई नो इट वुड बी 5 5 5 and 2. Very good. So the answer is going to be C. Yes, Saad, is it good now? All right. Okay, great. Let's try doing this one. The number of diagonals of a 12-sided figure. ठीक है, इसका आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है. Number of diagonals in an n-sided figure is what? N into n minus 3 divided by 2. ये फॉर्मूला है. ठीक है, अब अगर 12 साइड्स है, आप यहाँ पे 12 प्लग इन कर दोगे, आप यहाँ पे 12 प्लग इन कर दोगे. फॉर्मूला ये याद करने वाला है. ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला. So we will plug in 12 in n, 12 into 9 by 2
It's 1 times, it's 6 times, so it would give you 54. Very good. All right. Okay. Let's talk about the next question. Okay. अब it says NCR plus NCR minus 1. ठीक है, ये again इसमें यहाँ पे plus 1 second. ठीक है, अब ये अगेन थोड़ी सी थ्योरम टाइप चीज आपको पता होनी चाहिए. NCR प्लस NCR माइनस 1 मतलब कि क्या हो रहा है. द डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपके पास R है, यहाँ पे आपके पास R माइनस 1 है. व्हेन यू विल एड इट अप इट वुड गिव यू N प्लस 1 CR. ठीक है, सो द आंसर वुड बी D इन दिस केस. ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है यहाँ पे. C. ठीक है, are we good with D as the answer? Any confusions here? No. Okay. All right. Great. Then this question, I'll read it. I'll give you some time. Try doing it. Then we'll do it together. Okay. The probability that a 3-digit number chosen at random is divisible by 5. Okay. एक 3-digit number आपने कोई choose किया है. What is the probability कि वो 5 से divisible होगा? Yes. Take 2 minutes and then we'll solve it together. All right, let's see. Very well done. Very good. I got 3 answers and they are correct. ठीक है. The probability that a 3-digit number chosen at random is divisible by 5. अच्छा, 3-digit number है means I have 1, 2, 3 digits. पहले तो I need to find कि मेरे पास in total कितने 3-digit numbers हो सकते हैं. ठीक है. इन मैथ्स मेरे पास कितने नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो मेरे पास टोटल 10 नंबर्स होते हैं. ठीक है, 0 से लेकर 9 तक मेरे पास 10 नंबर्स होते हैं. फॉर अ नंबर टू बी 3 डिजिट, पहले ऑब्वियसली मैं 0 नहीं लगा सकती, तो पहले वाली ब्लैंक में मैं सिर्फ 1 से 9 तक काउंट करूंगी. मेरे पास 9 पॉसिबिलिटीज है. दूसरे वाले ब्लैंक पे मैं 0 भी लगा सकती हूँ, तो मेरे पास 10 पॉसिबिलिटीज है. और लास्ट में भी मेरे पास 10 पॉसिबिलिटीज है. दिस इज बेसिकली टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3-digit numbers. ठीक है, एंड दैट इज 900. तो इन मैथ्स इन टोटल मेरे पास 900 3-digit numbers हैं. ठीक है, जिस तरह आप 100 से लेके 999 तक काउंट करें तो वो भी आपके पास 900 होंगे. ठीक है, ये सारे 3-digit नंबर, इसके बाद वो 4 digit हो जाते हैं. अच्छा,
अब वो कह रहे हैं डिविजिबल बाय 5, तो अगेन 1 2 3, अब हमारी जो फेवरेबल आउटकम है, एक नंबर 5 से डिविजिबल होता है इफ इट इज एंडिंग बाय 5 और 0, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। इस वाले के लिए अगेन मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं, और इस वाले के लिए मेरे पास 9 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी 180. Now when I will do 180 divided by 900, so this is going to give me 1 by 5. So B is going to be the answer for the 14th question. Yes. Is it good? All right. It's great that all of you are participating and you're giving the correct answers. Very good. Okay. Because I have been teaching and I know कि कौन सी चीज difficult consider होती है students and कौन सी easy होती है, but all of you are doing really well, माशाल्लाह. तो इंशाल्लाह सैटरडे को जब क्विज होगा उसके बाद थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा. Okay. अच्छा, now it says if A and B are disjoint, then the probability of A union B is what? Okay. Yes. ये easy है. Try doing this one. वेरी गुड, आई गॉट 3 आंसर्स, दे आर करेक्ट. अब वो क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में हमारे पास दोनों ए और बी आते हैं, ठीक है. इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, I will be talking about probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. But since they are disjoint, वैसे तो ये आंसर होता है, लेकिन क्योंकि दे आर डिसजॉइंट ये चीज ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, सो द आंसर वुड बी डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, हमारे पास सिंपल एक ही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. ओके, ऑलराइट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. व्हाट, अच्छा, ये बेसिकली वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद बी. ठीक है, सुफियान ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए और बी. ऑलराइट, ओके. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट वन लास्ट क्वेश्चन. It says if a probability of a bulb being defective is 0.2, estimate how many defective bulbs there would be in 600 bulbs. अब जो स्टूडेंट्स ए लेवल्स वाले बैकग्राउंड से आपको याद होगा, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते थे. ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आती है, व्हेन यू मल्टीप्लाई द टोटल नंबर बाय द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो आपके पास 600 multiplied by the probability of a bulb being defective, that is 0.2. So this would give you the correct answer. So we are going to do 0.2 multiplied by 600 and that would be 120. So B would be the answer in this case. B 600 into 0.2 would give you 120. ठीक है, this would be the answer. All right. Any confusions in the questions we have discussed today? No. Okay, great. So, जो remaining questions हैं, I'll send those as homework.